Let's begin with an invocation. Be aware of your heart. Take a deep breath. Be aware of your crown. Take a deep breath. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Lord Mahagurji Mailing, to all the great ones, to my respected and spiritual teacher, Grandmaster Chokoksui, to my higher soul, my divine self, we humbly invoke for your divine guidance, divine help, and divine protection. We humbly invoke for your presence throughout this session. Thank you for blessing all of us with the ability to overcome our fears. To the healing angels, healing ministers, thank you for the miraculous healing in this session. In full faith, so be it. Gently open your eyes. Right? Atma Namaste to everyone once again. So let's begin with our topic for today, and we will be discussing on how to, and we will also practice healing on how to overcome fear related to losing our status or fear, in other words, losing our image, public image, not self-image, but public image. Okay, so how many of you suffer from this? बहुत बार हम लोग बहुत सारे decisions ऐसे होते हैं वो इसीलिए लेते हैं simply because what will people think about this, what will the society feel about this, yeah, there is sometimes a subconscious very strong fear which stops us from doing the right things simply because we are scared of society, we are scared of our own status where we are, and we are scared about our image in public. Now, एक है कि हम लोग को image बनाए रखनी है, that is one thing. But if we are fearful about it, तो अगर हम लोग fearful है कि मेरे status का क्या होगा, मेरी public image का क्या होगा, और उसके basis पे अगर हम decisions लेने लगते हैं, तो उस fear में we will again end up breaking a lot of virtues. Especially we will end up lying, we will try to put a mask, matlab hum log, I'm not talking about the face mask, but a mask on showing to public a different version of what we are. So इसमें क्या होता है कि लाइफ जो होती है इस फियर में एकदम डुअल हो जाती है कि दुनिया को दिखाने के लिए हम कुछ और हैं, और क्योंकि हमारे अंदर डर है इसीलिए हम लोग अपने अंदर की चीज किसी को दिखाना नहीं चाहते. Nobody wants to show what you truly are within. So people show, or simply because we are scared what will people say. Now इससे क्या होता है कि हम लोग झूठ भी बोलना सीख जाएंगे because we are scared what will people say. So to cover it up, you will start lying, then you will start lying again, then you start lying again. So here the problem actually sometimes is not manipulation, the problem sometimes is not also lying. What is the root problem here? बहुत सारे लोग ऐसे झूठ इसीलिए बोलते हैं just because they want to save their skin, they want to save their image. हमको पब्लिक में अपनी इमेज बनाए रखनी है इसीलिए हम झूठ बोल रहे हैं, या हमको डर है पब्लिक का कि पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगा इसीलिए हम झूठ बोल रहे हैं. तो इसके अंदर sometimes these type of people, or with us also, we are sometimes not really dishonest, or we are not really manipulating, but the root problem, जड़ क्या है इसकी? This fear, ये डर है हमारे अंदर. तो बहुत बार एक अच्छा खासा इंसान मैनिपुलेटर बन जाता है. एक होता है कि जान करके हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, किसी को स्ट्रैटेजी में फंसा रहे हैं, किसी के इनोसेंस का हम लोग फायदा उठा रहे हैं, उसके लिए ट्रैप बना रहे हैं, और फिर दैट इज एक्चुअली मैनिपुलेशन. बट मेनी टाइम्स डिसऑनेस्टी, आपके आसपास में भी आप देखेंगे कभी कभी हमारे बच्चे भी झूठ बोलने लगते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे ये तो झूठ बोल रहा है, तुम झूठे हो. सो दे आर नॉट लायर्स, they are just suffering with fear maybe of their parents, fear maybe of what will my family say. So lying, we need to understand that lying may not always be connected to maliciousness. Yeah, lying is not connected to always maybe हम लोग बोलते हैं झूठ बोला तो बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है या लायर है. Sometimes it is just fear. अंदर में डर है
क्योंकि हम लोग रिजेक्शन नहीं हैंडल कर सकते या कोई क्रिटिसिज्म नहीं हैंडल कर सकते, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला जाता है। तो बहुत तरह तरह के झूठ होते हैं। एक होता है दूसरे को बुद्धू बनाने का झूठ, लेकिन एक झूठ होता है अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठ। So that actually, in my mind, the root problem is not dishonesty. The root problem is fear. And this fear is what we call as fear of losing our status, fear of losing our kind of image. So this lying is happening simply because of the fear. Okay, so I'm sure all of us have done this sometime or the other in our life. Have we not? How many of you feel like you have experienced this? नो कि अपना इमेज बचाने के लिए हम छोटा मोटा झूठ बोल दिए, यू नो समटाइम्स पीपल डू दिस अ लॉट इन देयर कॉलेज डेज, यंग डेज, यू नो समटाइम्स वी डू लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी हम लोग शो ऑफ करते हैं, ये चीज बताते हैं कि ये मेरा है, लेकिन वो एक्चुअली में आपका नहीं है। दैट इज ऑल्सो फियर ऑफ लूजिंग आवर स्टेटस। ओके, सो वी वॉन्ट टू पर्पसली शो इट। समटाइम्स पीपल वॉन्ट टू शो दैट दे आर वेल्दी। किसी कोई फ्रेंड का गाड़ी लेके चले गए, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये मेरा गाड़ी है, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो क्या करे, उसको फियर है कि अगर हम एक बड़ा गाड़ी लेकर के इस पार्टी में नहीं जाएंगे तो शायद मेरी स्टेटस लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस, यू नो। सो वी हैव टू चेक, आर वी sometimes portraying something to the world what we are not inside? Then we need to get rid of this fear, and we need to remind ourselves that fear is unreal. We need to remind ourselves that fear is unreal, and especially this fear of status, of public. सिर्फ हमारे अंदर नहीं, we end up then downloading it on our children also. अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, you know, what will this person say, what will that person say? So actually we should just be bothered about what will our higher soul say or what will our inner conscience say. लेकिन inner conscience को तो हम साइड करके यही सोचते हैं कि what will the public say or what will the people say around us. So we have to drop these fears. और एक और चीज मैं आपको बोल दूं कि पब्लिक को जो क्रिटिसाइज करना है, वो जिसको करना है, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, वो फिर भी क्रिटिसाइज करेंगे। यू नो, वो बोलते ना क्या कहेंगे लोग। तो अब आप ये सोचिए कि जिसको क्रिटिसिज्म करने की आदत है, जिसको दूसरों में गलतियां निकालने की आदत है, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी वो गलतियां निकालेंगे। और ऐसे लोगों से डर के आप जियोगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग सब अगर इफ वी स्टार्ट फियरिंग दिस पर्टिकुलर सोसाइटी और अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल who are criticizing anybody and everybody, and if they are very good at finding faults, तो आपने ये शायद कोशिश भी की होगी। समटाइम्स हम लोग कोशिश भी करते हैं just to heal relationships or to make the relationships better. We behave properly, we behave in a different manner, we try to be something that we are not, we try to package ourselves in a way that we are not, just to keep that other person happy. But you will also see कि उससे कोई फायदा नहीं होता है। That person will now find a new problem in you, will now find a new error in you. वो कुछ ना कुछ नया चीज ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको फॉल्ट फाइंडिंग की आदत है। सो हमारे सबके लाइफ में there are certain people like that who will always find faults, who love to find faults. So what do we do with such people? What do we do? Will we fear them? No, उसी fear को हम लोग अपने अंदर से हटाएंगे so that we are not fearful of such people anymore, and we do what is right, because this fear is unreal. Especially this fear of status, कि मेरा status lose हो जाएगा। आपका status, in fact, अगर हम लोग character wise कुछ गलत करते हैं, जेन्युइनली हम लोग कैरेक्टर वाइज कुछ गलत करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल स्टेटस जरूर से हम लूज करेंगे, एंड दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन लूजिंग योर सोसाइटी स्टेटस. सो लेट अस कंटिन्यू टू बी ऑन द path of being spiritual in terms of doing what you feel internally is right, because जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फर्क पड़ता है, तभी फर्क पड़ता है जब हमारे अंदर फियर होता है। और इसी फियर को हम लोग, we will now do some prayers and some healing to drop this fear within us and to heal ourselves from this fear and continue to be who we are. हम लोग जैसे भी हैं, let us continue
to be what we are inside. Let's try and keep the same outside and not do any kind of pretend play, especially because we are fearful about the society or public, or fearful about losing our status. All right, so let's start with a healing prayer. Yeah, so just take a deep breath, smile, just be aware of your inner stillness. Inhale, exhale, inhale again, exhale, inhale, exhale. To the Supreme God, to the healing angels, healing ministers, thank you for healing us. I am now aware about this fear of losing my status. I am the soul. I am not this fear of public opinion or losing my status, losing who I am. I am the soul. I am not this fear, and I let go of this fear. I now realize that I need to be myself. I don't need to be something that I am not because of this fear. This fear is making me lie. This fear is making me manipulate at times. I don't need this fear anymore, and I release this fear right now. So be it. I am the soul. I am not this fear. I release this fear. Thank you, God, for blessing us with miraculous healing energy. May we be healed. Imagine that there is a downpour of brilliant white light purifying us and flushing out all these fears from our auras and our chakras. Inhale. As you exhale, you say, I drop, I release, I let go. I am not these fears and I don't need these fears anymore. I drop it right now. So be it. Thank you, God, for blessing us with inner strength to be who we are. Thank you, God, for blessing us with the inner strength to continue to do what is right. Thank you, God, for giving us the inner strength to be honest and not lie out of fear. Thank you, God, for blessing us with tremendous courage and inner strength to be who we are. In full faith, so be it. Gently open your eyes. How do you feel? Just check. Do you feel lighter? Especially in your chest area? Yeah. So you can continue. By the way, जब हम लोग का ये series खत्म हो जाएगा, then this entire series will be up on the Life Simplified app, so that you can listen to the prayers every day and try to let go of it. So once the series is over, the full pack of videos will be up on the app. Thank you very much. Atma Namaste to all of you.